Hi, and welcome back to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. My last video was on sleep apnea, and this video is on restless leg syndrome. That is also a sleep disorder. Okay, and this series is on sleep disorder. If you have not checked my last video on sleep apnea, please go ahead and check it. And also check my other video on sleep disorders. So let's talk about restless leg syndrome. Is a brain, nerve, and sleep condition that causes strong, nearly irresistible urge to move your legs that's the least partially relieved by movement. क्या होता है इसमें कि आपका स्लीप कंडीशन है, नर्व एंड स्लीप कंडीशन दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग एंड नियरली इररेसिस्टिबल. आपको बार बार कंपल्शन होगा, बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगे कि आप अपने लेग्स को मूव करें. सिम्टम्स आर मोर कॉमन व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्ट. ये आपका स्लीप डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर है. तो जब आपकी बॉडी रेस्ट होगी तो तब आपको ये बहुत बार ये ऑब्सेशन होगा कि मैं बार बार रिकरेंट थॉट्स आएंगे कि बार बार मैं उठाऊं, और फिर उसके बाद आपका पैर जब लेग मूव करोगे और तो आपका जो एक है या थ्रॉबिंग होगी या एकिंग होगी पैर में, वो ठीक हो जाएगी. यू विल फॉल रिलैक्स एंड यू विल फॉल स्लीप अगेन. ओके, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? अर्ली ऑनसेट होता है और लेट ऑनसेट में. ये दो टाइप्स इसमें किए गए, कैटेगराइज किए गए. A diagnosis happens before age of 45. It usually runs in your biological family history and condition progress slowly. अगर आपके जीन्स में चला आ रहा है तो ये इस वजह से होता है. Late onset RLS progresses more quickly and diagnosis happens after age 45. Age 45 के बाद होता है, तो then it is a late onset. And how common is restless leg syndrome? Between 7% and 10% of United States population has restless leg syndrome. It is more common among white people and people assigned female at birth. ओके, यहाँ नार्कोलेप्सी में मेल एट बर्थ था, यहाँ पे आपका क्या आ गया, फीमेल एट बर्थ. योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट इंक्रीजेस एज यू गेट ओल्डर. ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? आपके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन योर लेग्स दैट मेक्स यू मूव, वांट टू. आपके अनकंफर्टेबल पेन हो सकता है, या फिर और ट्विचिंग आ सकती है, आप बार बार पैर हिलाने की कोशिश करोगे. और ट्विचिंग योर लेग्स और जर्क्स इन द इवनिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप. इवनिंग और ड्यूरिंग स्लीप के उसमें हो सकता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है. सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कैन अफेक्ट योर स्लीप. आपको स्लीप डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो स्लीप डिस्रप्टिव डिसऑर्डर. द अर्ज टू गेट आउट ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच और मूव योर लेग्स. फैटीग और डे टाइम स्लीप. जब आप बार बार ये कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, दैट इज व्हाई आपका प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं हो रहा है. इस वजह से फैटीग रहेगा और डे टाइम स्लीपीनेस रहेगी. बिहेवियर और मूड चेंजेस प्रॉब्लमली होंगे ही होंगे. क्यों? क्योंकि आपका पूरा स्लीप साइकिल नहीं सही से हो रहा है. जब आपके स्लीप साइकिल नहीं सही होता है ना, तो आपको इरिटेबिलिटी आती ही आती है, और जब इरिटेबिलिटी आएगी तो बिहेवियर और मूड चेंजेस होंगे ही होंगे. डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन. अब भाई जब पूरा स्लीप साइकिल है नहीं, आपका अटेंशन है नहीं सही पे, तो आपका पेइंग अटेंशन सही नहीं रहेगा. रिमेंबरिंग थिंग्स और कॉन्सेंट्रेटिंग आपका वो सही नहीं रहेगा. दैट इज व्हाट इज डिप्रेशन और एंजाइटी भी आएगा, क्योंकि प्रॉपर आप सो नहीं पा रहे हो. और प्रॉपर आप जब सो नहीं पा रहे हो तो आपका नए न्यूरॉन्स नहीं बन पा रहे हैं, वो बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है चीजों से. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कैन कॉज सेंसेशन दैट मेक्स यू want to move your legs. वही मैंने पहले भी बात करी. These sensation most often happen in your legs, but they can also affect your arms or entire body. You may experience the following feelings. ये experience हो सकती है following feeling: crawling, itching, aching, burning, throbbing, pulling and tugging. और जब आप अपना मूव कर देते हो पैर इधर उधर, तो वो चीजें ये चली जाती हैं. रिसर्च सजेस्ट दैट द फॉलोइंग में कंट्रीब्यूट टू आरएलएस. क्या क्या कैसे हो सकता है? जेनेटिक्स एक पार्ट है. ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, दैट्स लीड टू एन आरएलएस डायग्नोसिस. आयरन डिफिशियंसी से भी हो सकता है. अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, सब कंडीशन कैन कॉज आरएलएस which occurs in another medical condition. Medical medication, certain like antihistamine or antidepressant or antioxidant can cause RLS or make symptoms. ये भी इस वजह से भी हो सकता है. ठीक है. What condition causes restless syndrome? वही वाला आपको पहले ही बताया. एनीमिया की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, किडनी डिसीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है, ये भी डायबिटीज का ही पार्ट है. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. what triggers restless leg syndrome? आपका अल्कोहल ट्रिगर कर सकता है, कैफीन ट्रिगर कर सकता है, निकोटीन प्रेफर कर सकता है, सर्टेन मेडिकेशन जैसे आपका स्ट्रेस भी कर सकता है. व्हाट एज डज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपका अफेक्ट करता है? कॉमन पीपल अफेक्ट आफ्टर एज 50. बच्चों में भी होता है, जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं उनको मन करता है कि हाँ पैर हिलाना है, ये करना है, वो करना है. बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव वाले बच्चों को भी होता है. टू कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ आरएलएस, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल लुक फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया.
ठीक है, यहाँ पे you have urge to move your legs, usually occurring with uncomfortable sensation like aching or pulling. Symptoms begin or worse during periods of rest or inactivity. You have partial or total relief while when stretching, walking or exercising the affected muscle. वही मैंने बोला, जब आप partial relief मिलेगा जब आप stretching, waking or walking और stretching करोगे उस affected muscle को. Your symptoms are worse or only occur in the evening at night जब आपकी बॉडी रेस्ट फेज में होती है. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्लीप डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर. एनी अदर मेडिकल कंडीशन डिडंट कॉज योर सिम्टम्स. ठीक है. Is restless leg syndrome hard to diagnose in children? Yes, it is sometimes difficult for healthcare provider to diagnose in children. This is because a child may not be able to describe their symptoms or what they feel like. It is common for adolescents and children to look like an ADHD or growing pains. ठीक है, मैंने पहले बात करी ADHD की. यहाँ पे अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं. रेस्टलेस लाइक सिंड्रोम medications में certain medications can help relieve your symptoms of paralysis. That is iron supplements यूज कर सकते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, डोपामिन एग्नोसिस्ट यूज कर सकते हैं, डोपामिन प्रिकर्सन यूज कर सकते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस लाइक बेंजोडाइजेपीन और क्लोनाज़ेपाम यूज कर सकते हैं, और ओपियोइड्स और मेथोडोन यूज कर सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स. ब्लड टेस्ट आप यूज कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं आपका आयरन लेवल कैसा है. आरएलएस सिम्टम्स आर सीवियर एंड आयरन में इन्फ्यूजन में हेल्प. मेडिकेशन दैट इंक्रीज डोपामिन कैन वर्सन आरएलएस सिम्टम्स. तो आपका डोपामिन एंटागोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं. सो रेस्टलेस or at home restless leg syndrome therapies भी यूज कर सकते हैं. If you have mild RLS symptoms, the healthcare provider may recommend the following at home therapies: getting regular exercise, heavier intakes exercise with a few hours of bedtime, following good sleep habits, soaking your legs in a warm tub, that may can help. This may provide temporary relief from your discomfort, reducing your overall stress. Avoid caffeine intake like drinking coffee before bedtime. What relieves restless leg syndrome? Moving your legs can temporarily relieve restless legs immediately, but your symptoms often return when you stop moving. You can also try massaging your legs, walking around, stretching. Is restless leg syndrome serious? Restless leg syndrome doesn't affect your life expectancy, आपके life पे affect नहीं करेगा, but it can affect your overall wellness. Symptoms may be mild to severe. Even mild symptoms can have major impact, depending on you what your definition. But आपकी sleep को तो खराब कर ही रहा है. But is there a cure for restless leg syndrome? There is no cure as it is. But ये जो medications हैं, ये therapy है, that can also help in restless leg syndrome. So this is all about restless leg syndrome. That was a sleep disruptive disorder. In my next video, I will start with neurodegenerative disorders, and that series will be on all neurodegenerative disorders. Okay, so this is all about sleep disorders. Okay, thank you. If you have any questions, please ask in the comment section. Thank you.